So this document also I will share with you, but let us go through it in the class once. In the beginning, you will find some information about romantic movement in general. I hope you can see it. आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. Okay. Screen दिख मतलब clear दिख रहा है. Shelley as a romantic poet दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. Okay. So the best known romantic poets are William Blake, William Wordsworth, Lord Byron, John Keats, Coleridge, and E.B. Shelley. Let me strike out the name of Matthew Arnold because Matthew Arnold, he was a Victorian poet. I don't know why they have included him in the Romantic age. And yes, someone please do take a pic. ठीक है, आप लोग फोटोग्राफ्स खींच के और ग्रुप में शेयर कर देना. So let us in a very brief, let us first discuss what kind of poetry Shelley wrote. What were the chief characteristics of Shelley's poetry? Then you will be able to identify those characteristics in the poems which we are going to study. Okay, so first, because he is a romantic poet, so this is a quintessential characteristic that his love of nature. Most of the poems are written. The most common theme in romantic poetry is love of nature, and that you will also find in the poetry of Shelley. ठीक है, शैली की पोएम में भी ये जो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है रोमांटिक पोएट्स का कि उन्होंने बहुत सारी पोएम्स थीम कौन सी थीम पे लिखी है? फॉर देयर लव ऑफ नेचर. तो आपको शैली में भी जो है ऐसे ही आपको बहुत सारी पोएम्स मिलेंगी जो कि नेचुरल ऑब्जेक्ट्स पे लिखी गई है. फॉर इंस्टेंस द पोएम जो आपके सिलेबस में है, टू अ स्काईलार्क, द थीम इज स्काईलार्क इज अ बर्ड. ठीक है, स्काईलार्क क्या होती है? एक बर्ड होती है. सो ही हैज रिटन दिस पोएम ऑन अ बर्ड. ठीक है, सो ऑफ कोर्स लव ऑफ नेचर. देन इमेजिनेशन, मैंने आपको ये पहले भी बताया था कि रोमांटिक पोएट्स दे valued imagination in poetry over rationalism. He considered imagination to be very important while writing poetry. So you will find that his poems are very imaginative, and I will tell you how when we will study a skylark. Melancholy. Melancholy word हमने पहले भी पढ़ा था. What does it mean? Melancholy का मतलब क्या होता है? मैंने आप लोगों को पोएम्स पढ़ाई थी. आई डू नॉट, यस, एपिक के सॉरी एलिजी के कॉन्टेक्स्ट में हमने मेलनकली वर्ड पढ़ा था. व्हाट डज इट मीन? आई एम राइटिंग दिस वर्ड इन द चैट बॉक्स, सो do look up the word because you will encounter this word again and again in a class. ठीक है, आपको इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए क्योंकि ये वर्ड बार बार आएगा जब हम पढ़ेंगे. ठीक है, so you should look up the word, meaning of this word, melancholy. Melancholy occupies a prominent place in romantic poetry because it is a major source of inspiration for the romantic poets. Though Shelley was a man of hope and expectation and spiritualistic about the future of mankind, yet he represents himself in his poems as a man of ill luck, subject to evil and suffering. Okay, so melancholy is basically sadness. So you will find that the mood of the poems of the romantic poets is generally about the grief of mankind, about sadness. जो उनकी पूरी टोन होती है poems की वो कैसी होती है? जो mood होता है one of sadness. So we'll see how supernaturalism we had already discussed when we had done the characteristics of romanticism. What is supernaturalism? Something which is not natural. Okay, so a lot of poems are about ghosts,
और अबाउट सुपरनैचुरल थिंग्स। ठीक है, तो यही आपको देखने को मिलेगा। Let me read out. The ghosts and spirits in his poems suggest the possibility of glimpsing a world beyond the one in which we live. Now, these romantic poets, they believe that there is a better world somewhere. हम जहाँ रह रहे हैं उससे एक अच्छा जो है एक वर्ल्ड कहीं है। उनके इमेजिनेशन में बार बार जो है उनकी पोएम्स में बार बार ये कॉन्सेप्ट आता है that they imagine that a better world for human beings exists somewhere beyond earth. हम्म, और वो बार बार अपनी पोएम्स के थ्रू कोशिश करते हैं इमेजिन करने की कि वो बेटर वर्ल्ड कैसा होगा। आपको इसमें भी मिलेगा टूवर्ड्स स्काईलार्क में भी ये कॉन्सेप्ट। देन देयर इज हेलेनिज्म। What is Hellenism? The world of classical Greece was important to the Romantics. Shelley wrote Hellas, which is the ancient name of Greece. Ozymandias is an ancient Greek name for Ramses II of Egypt. ठीक है, जो आपकी जो दूसरी सोनेट है जिसका नाम है ऑजिमैंडियास, ऑजिमैंडियास जो है क्या है, इट इज ग्रीक नेम। ये ग्रीक नेम है किसका, अ किंग ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट का एक किंग, देयर वाज अ वेरी पॉपुलर किंग ड्यूरिंग एंशिएंट टाइम्स जिसका क्या नाम था, रामसेस सेकंड। और उसको ग्रीक लैंग्वेज में उस नाम को क्या कहते थे, ऑजिमैंडियस। ऐसे होता है ना कि नेम्स भी चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं और हिंदी में वो क्या हो जाता है, अरस्तु, है ना। तो इसी ऐसे ही जो है जो रामसेस सेकंड था इजिप्ट का, उसको ग्रीक लैंग्वेज में जो है उस नाम को क्या बोलते थे, ऑजिमैंडियास। तो ये जो आपकी जो सेकंड सोनेट है, जो सेकंड पोएम है सिलेबस में शैली की, वो किसके बारे में है, इट इज अबाउट अ किंग ऑफ एंशिएंट इजिप्ट। Shelley was mainly influenced by Platonism. Okay, you need not go into so much detail. अभी आप सेकेंड ईयर में हो। Beauty. Most of the poems are about beauty. They appreciated beauty in every form of nature. ठीक है, वो उन्होंने फ्लावर्स के ऊपर, फ्लावर्स की ब्यूटी के ऊपर जो है पोएम लिखी है, उन्होंने बर्ड्स की ब्यूटी के ऊपर पोएम्स लिखी है। So for them, ओनली ह्यूमन बींग्स वर नॉट ब्यूटिफुल। जनरली हम जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है उसको हम किससे एसोसिएट करते हैं, विद ह्यूमन बींग्स, है ना। वी से दैट दैट वुमन इज वेरी ब्यूटिफुल, दैट मैन इज वेरी हैंडसम, बट फॉर देम ब्यूटी इज समथिंग ग्रेटर देन ह्यूमन बींग्स एंड कैन बी सीन इन नेचर ऑल्सो। नेचर में गॉड के जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं, इवन अ रॉक, अगर आप कोई रॉक देखो बहुत ध्यान से देखो, उसमें आपको शेड्स दिखेंगे, ग्रेन्स दिखेंगे, है ना। देन यू विल सी दैट इवन द very commonplace objects which we ignore as something very ordinary, even they are very beautiful if looked at with curiosity। ठीक है, अगर आप किसी भी छोटे से छोटे पत्थर को भी बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको क्या लगेगा, उसमें भी आपको ब्यूटी दिखने लगेगी। ठीक है, सो दिस वाज द आइडिया ऑफ ब्यूटी फॉर द रोमांटिक्स। Okay, because we should know about what he meant by intellectual beauty. Beauty is another element of romanticism in Shelley's poetry. Beauty to Shelley is an ideal in itself and a microcosm of the beauty of nature, and he calls it intellectual beauty. He celebrates beauty as a mysterious power in the arts to intellectual beauty. He says that when intellectual beauty departs, this world becomes a dim, vast vale of tears, vacant and desolate. And if human heart is its temple, then man would become immortal and omnipotent. Okay, so he calls the beauty that we find in the smallest objects of nature, he calls such beauty as intellectual beauty. Idealism. I will skip this portion because uh, idealism is associated with the political poems that they have written. मैंने आपको बताया था कि जितने भी रोमांटिक्स हैं, they were very much influenced by the French Revolution. उनके ऊपर जो है किस चीज का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था,
French Revolution ka, and they have written many political poems also. So this element of idealism, it is mostly concerned with the political poems that they have written, and every writer has written political poems. Wordsworth ने भी बहुत सारी political poems लिखी हैं. And Shelley, he has written a lot of pamphlets. Pamphlets आप what are pamphlets? पेपर पे जो है लिख के आप अपने पॉलिटिकल व्यूज एंड यू यूज टू डिस्ट्रीब्यूट. जैसे आपके हम लोग को एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं, है ना, एक पेपर पे जो है ये ऑफर है, ये ऑफर है, ऐसे करके आप घर से बाहर निकलोगे तो अक्सर आपके जो गेट के पास ऐसे पैम्पलेट्स पड़े रहते हैं. तो पहले पैम्पलेट्स कैसे होते थे? पॉलिटिकल पैम्पलेट्स होते थे. लोग अपने पॉलिटिकल व्यूज रिगार्डिंग एनी लॉ, कोई लॉ पास हुई है उसमें, उससे रिलेटेड क्या पॉलिटिकल व्यूज हैं, वो सब लिख के and then those would be distributed. If you are going to study the life of Shelley, it is very enigmatic. आपको आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट, तो आप उसमें एक बार शैली की लाइफ जरूर पढ़ना. ही वॉज अ वेरी रेवोल्यूशनरी कैरेक्टर. he had revolted against conventions in society at every stage in his life. ठीक है, वो जो है रूल्स मानना, कहते हैं ना कि जिसकी आदत में होता है कि उसको रूल्स नहीं फॉलो करने हैं. ही वॉज दैट काइंड ऑफ पर्सन. So you will feel quite entertained by reading his life. And he died very young also. I think when he died, he was just 40 years or 35, between 35 to 40 years he had died. You know? And his death was also very mysterious. He drowned in a river, and some people say that his political opponents had pushed him. उसकी बॉडी जो है कहाँ मिली थी? एक रिवर में मिली थी, और इट वॉज साइटेड एज एन एक्सीडेंट. उसको लोगों ने एक्सीडेंट बताया था, लेकिन बहुत लोग जो है वो क्या कहते हैं कि शैली को जो उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे उन्होंने मरवाया था. ठीक है, सो यू विल फाइंड हिज लाइफ वेरी इंटरेस्टिंग. गो थ्रू इट वंस. Poetic style. Shelley's poetic style is also romantic. To some extent, it is an imitation of William Wordsworth's style. He uses a lot of powerful symbolism and imagery, especially visual. The series of gorgeous similes in the Skylark show the romantic exuberance of Shelley. His diction is lush and tactile, but he never uses any ornamental word, and every word fits in its place and carries its own weight. ठीक है, मैंने आपको बताया था this was also a principle of romantic poetry, that they write in very simple language. है ना? They always try to use words that are simple and useful. They do not include any word just for ornamentation कि ये सुंदर लगेगा यहाँ पे वर्ड तो हम इसको लगा देते हैं. They do not do this. है ना, वो कोई भी वर्ड अगर पोएम में इंक्लूड करते हैं, that means that word has a meaning there, जो कि उस लाइन में फिट हो रहा है. ठीक है, so very simple language with the use of very simple words for simple people. This was the ideal of romantic poets. And of course, symbolism and imagery, which is mostly visual, is used by Shelley. So I will share this document also with you. It will be helpful for you in writing the critical comments. ठीक है, ये सब जो पॉइंट्स हैं इनसे आपको क्या हेल्प मिलेगी कि जब भी आपको एक्सप्लेनेशन में क्रिटिकल कमेंट्स लिखने होंगे, you can use these points. So let us move on to his poems. मैंने आपके साथ टेक्स्ट शेयर नहीं किया ना अभी पोएम्स का, वो आपके पास पोएम्स होंगी भी नहीं. ओके, आई विल शेयर इट नाउ. इस क्लास के बाद आई विल शेयर, एंड लेट मी रीड आउट द पोएम टू यू फर्स्ट. आई फॉरगॉट टू शेयर द पोएम्स विद यू, नहीं तो आप उसको रेडी रख सकते थे.
Last poem. Okay. The first poem is To a Skylark by Percy Bysshe. Bysshe. By Percy Bysshe. मैम हाँ, बोलो बेटा। मैम आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं लिख लिया? ओके, आई डू मैम इट। यस। अब दिखी? मैम नहीं। मैम आरती वर्मा ने स्क्रीन शेयर कर रखी है। ओके। हाँ, आरती वर्मा इस ठीक। ओके बेटा, आरती मैम यस अब दिख रही है। मैम अब हट गई है। बंद कर दिया ना? यस मैम। Okay. So now you can see the poem. यस Okay. मैम। यस मैम। To a Skylark. It is a poem written by the full name of P.B. Shelley is Percy Bysshe Shelley. अगर आपको जो है स्पेलिंग्स याद ना हो तो गलत नहीं लिखना, जस्ट राइट P.B.Shelley। ठीक है, तो पीबी शैली से भी काम चल जाएगा। अगर आप पूरा नाम याद कर सकते हो तो कर, बट इट शुड बी रिटन करेक्टली। Hail to thee, blithe spirit, bird thou never wert, that from heaven or near it pourest thy full heart in profuse strains of unpremeditated art. Higher still and higher from the earth thou springest, like a cloud of fire. The deep blue thou wingest, and singing still dost soar, and soaring even singest. Like the golden lightning of the sunken sun, over which clouds are brightening, thou dost float and run, like an unbodied joy whose race is just begun. The pale purple even melts around thy flight, like a star of heaven in the broad daylight. Thou art unseen, but yet I hear thy shrill delight, keen as are the arrows of that silver sphere whose intense lamp narrows in the white dawn clear, until we hardly see, we feel that it is there. All the earth and air with thy voice is loud, as when night is bare from one lonely cloud, the moon rains out her beams, and heaven is overflowed. What thou art we know not, what is most like thee? From rainbow clouds there flow not drops so bright to see, as from thy presence showers a rain of melody. Like a poet hidden in the night in the light of thought, singing hymns unbidden, till the world is wrought to sympathy with hopes and fears it heeded not. Like a high-born maiden in a palace tower, soothing her love-laden soul in secret hour, with music sweet as love, which overflows her bower. Like a glow-worm golden in a dell of dew, scattering unbeholden its aerial hue, among the flowers and grass, where screen it flows which screen it from the view. Like a rose embowered in its own green leaves, by warm winds deflowered till the scent it gives makes faint with too much sweet those heavy winged thieves. Sound of vernal showers on the twinkling grass, rain awakened flowers, all that ever was. Joyous and clear and fresh thy music doth surpass. Teaches sprite or bird what sweet thoughts are thine. I have never heard praise of love or wine that panted forth a food of rapture so divine. Chorus hymeneal or triumphal chant matched with thine would be all, but an empty want, a thing wherein we feel there is some hidden want. What objects are the fountains of thy happy strain? What fields or waves or mountains
What shapes of sky or plain? What love of thine own kind? What ignorance of pain? With thy clear keen joyance, languor cannot be. Shadow of annoyance never came near thee. Thou lovest, but never knew love's sad satiety. Waking or asleep, thou of death must deem things more true and deep than we mortals dream. Or how could thy notes flow in such a crystal stream? We look before and after, and pine for what is not. Our sincerest laughter with some pain is fraught. Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. Yet if we could scorn, hate, and pride and fear, if we were things born not to shed a tear, I know not how thy joy we ever should come near. Better than all measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou corner of the crown. Teach me half the gladness that thy brain must know, such harmonious madness from my lips would flow, the world should listen then as I am listening now. So this is the poem, and you can feel in the words the musicality, how musical the whole poem is. And this poem is surprisingly about bird, and that also it focuses upon its song. ठीक है. ये जो पोएम लिखी है शेली ने, ये किसके ऊपर लिखी है? एक स्काईलार्क के ऊपर लिखी है. व्हाट इज अ स्काईलार्क? स्काईलार्क इज अ बर्ड एंड इट सिंग्स वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग्स. जो स्काईलार्क की वॉइस होती है वो कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है. और उसी के सॉन्ग्स पे जो है ये पूरी पोएम पीबी शैली ने लिखी है. Now, why he is so impressed by the songs, or what he wants to know from the skylark is that how is she always so happy? Hmm? अगर वो इतने सुंदर जो है वो गाना गा रही है, अगर उसकी वॉइस इतनी अच्छी है, तो इसका क्या मतलब है? She is very happy. The happiness is flowing out of the bird in the form of a song. तो जो वो happiness है वही जो है उसके song में sweetness ला रही है. ठीक है. So the poet wants to know how Skylark manages to remain so happy all the time. ठीक है. पोएट क्या सीखना चाहता है स्काईलार्क से? कि वो भी जो है उस स्काईलार्क की तरह हमेशा खुश रहे और उसके जो सॉन्ग्स है, जो वो पोएम्स लिख रहा है, वो भी उतने ही अच्छे हो. ओके. सो आई वुड लाइक टू शो यू अ पिक्चर ऑफ स्काईलार्क. इससे पहले मैंने भी स्काईलार्क नहीं देखी थी. इट इज नॉट एन इंडियन बर्ड, है ना. ये इंडियन बर्ड नहीं है, इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी. सो लेट मी शो यू अ स्काईलार्क ताकि आपको याद रहे कि ये पोएम किसके बारे में है. Okay. You can see this little bird. Yes, ma'am. It is most. It is almost like a sparrow. जो हमारे यहाँ वो ब्राउन कलर की छोटी सी बर्ड होती है ना, जो घूमती रहती है हमेशा. आपको हिंदी में उसको क्या कहते हो? गौरैया कहते हैं, क्या कहते हैं? जो छोटी सी ब्राउन कलर की बर्ड होती है, ऑलमोस्ट वैसे ही है ये स्काईलार्क. एंड बट इट हैज अ क्राउन ऑन इट्स हेड. ठीक है. सो इट इज नॉट वेरी good looking, very distinguished in its looks, but I'll tell you what is very distinguished about these birds. The skylark has a crest of feathers on its head as it raises when it is excited or shocked, so sort of like a feathery mohawk. ठीक है. mohawk से आप मत कंपेयर करो. इट इज लाइक अ क्राउन ऑन इट्स हेड. बर्ड के जो है हेड पे क्या लगता है कि जैसे कि क्राउन है फेदर्स का. इट इज इन द रेड लिस्ट.
it is getting extinct. धीरे धीरे खत्म हो रही हैं skylarks. The skylark is a super flyer. It carries out display flights where it flies vertically into the air, very impressive. Why I am telling you all this, and I can show you a picture also of the skylark flying, क्योंकि बहुत सारी images जो है poet ने यूज करी है poems में skylark की फ्लाइट को लेके कि वो कैसे जो है ऊपर ऊपर उड़ रही है और कितनी सुंदर लग रही है. ठीक है. So this is a special feature of skylark where it flies vertically into the uh, sky. I will show you कि skylark जब उड़ती है तो कैसी लगती है. And it is very beautiful actually. I downloaded a pic of a skylark flying for you people. I hope it is clear. See how beautiful it is looking while it is flying. आप लोगों को पिक्चर दिख रही है? ठीक है. Yes, So ma'am. you can imagine that the poet is sitting and he is looking at a skylark which is flying. ठीक है. जो पोएम का सेटअप है वो क्या है कि पोएट बैठा हुआ है और वो स्काई लार्क को जो है उड़ते देख रहा है कि वो कैसे धीरे धीरे ऊपर जा रही है और ऊपर जा रही है, क्लाउड्स के पास पहुंच गई, क्लाउड से ऊपर चली गई, है ना. एंड ही इज जस्ट enthralled by this sight and he has written a poem on this bird. ठीक है. तो वो ये साइट देख के वो इतना खुश होता है कि and he starts thinking about the bird. Now, जब आप Keats पढ़ोगे, you will study a term which is, I'll write in the chat box, negative capability. Now, the romantic writers, they shared this unique uh, imaginative, a unique sense of imagination, which they called as negative capability, which we can in simple words also call empathy. ठीक है. So what is empathy? आप लोगों ने sympathy word सुना होगा, है ना. सबने sympathy word सुना है? Yes, ma'am. ठीक है. So what is sympathy? आप कहते हो ना कि sympathy बहुत sympathy show कर रहे हैं, तो क्या sympathy क्या होता है? सिंपैथी मतलब मैम जब आप किसी के दुख को रियलाइज करते हैं, पेन सामने वाले का अंडरस्टैंड करना, एंड एम्पैथी कि जब आप उनके पेन में अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ मैं आपका पेन समझ सकती हूँ. दिस इज नोन एज एम्पैथी. Um, you are empathetic when you can place yourself in someone else's shoes and start thinking about that and start thinking like that person. ठीक है. एम्पैथी क्या होती है? जब आप अपने आप को किसी दूसरे की जगह रख के उसकी तरह सोचने लगो. ठीक है. That is empathy. Now, in the poetic terms, this was termed as negative capability by the romantic writers. वो क्या करते थे कि वो जिस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही.
Okay. So sorry for the disturbance, but then